Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the photocatalysis. This is also a type of heterogeneous catalysis in which we use the heterogeneous catalyst in the presence of light, in the under irradiation of the light. Light visible भी हो सकती है और UV भी. So what is photocatalyst या photocatalysis? A change in the rate of chemical reactions. Change in rate of chemical reactions under the action of light in the presence of substance. Under the action of light in the presence of substance. Substance called photocatalyst. इस substance को क्या कहते हैं? Photocatalyst. Is called catalysis, photocatalysis. Photocatalysis is the change in rate of reaction under irradiation of light, under the action of light in the presence of a substance is called photocatalysis. वो substance क्या है? The substance that is called photocatalyst. Photocatalyst absorb light. Photocatalyst absorb light quanta that is involved and are involved in the chemical transformation of the reactants and are involved in transformations, chemical transformations of reactants. What does a photocatalyst do in a photocatalytic reactions? The photocatalyst absorbs light and it is involved in the chemical reaction, chemical transformation of the reactants. Typical photocatalysts are semiconductor materials. Photocatalyst है क्या? Typical photocatalyst are semiconductor materials. Semiconductors, which are metal oxides, they can be used as a photocatalyst. There are many chemical compounds which may act as a photocatalyst. There are many, यानी semiconductor के अलावा और भी है. There are many materials which may be used, may act as photocatalyst. However, the semiconductor are more stable and active. However, semiconductor act as efficient and stable photocatalyst. Generally, the semiconductors are used as a photocatalyst. Besides, इसके अलावा semiconductor के अलावा और भी ऐसे metal oxides हैं जिनको as a photocatalyst use कर सकते हैं, लेकिन उनकी activity कम है as compared to the semiconductor. Semiconductors have some unique characteristics, therefore they are used as a photocatalyst. Semiconductors have some unique characteristics. जिसकी वजह से उसको हम एज अ फोटो कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं. दे हैव सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. और वो क्या है? सेमीकंडक्टर्स
have manifold of electron energy levels. Semiconductors have manifold electron energy levels. Some are filled, some are vacant. Some are filled while some are vacant. So there is a wide region. These semiconductors possess a wide energy regions. Semiconductor possess a void means empty energy region. In this wide energy region, there is no energy levels available. No energy level is available. This wide region extends from top of the filled energy level to bottom of the vacant energy levels. Semiconductors have a unique characteristics. वो क्या है? Semiconductor possess a wide energy region. इस region में कोई energy level नहीं है, ये एक खाली जगह है. There is no energy level available in this region. And this region extends from the top of the filled energy level to the bottom of the vacant energy level. This filled energy levels, they are called as valence band. VB, and empty या vacant energy level, they are called conduction band. CB, and there is a gap, a wide region between valence band and conduction band. This wide region between these two bands is called the band gap. The wide region between valence band and conduction band is called band gap of the material, or the difference between bands, the difference between energy of the valence band and conduction band is band gap. The difference between energy of valence band and conduction band, that is called band gap. ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, so semiconductor have different energy levels. ये है फॉर एग्जांपल ये फील्ड एनर्जी लेवल्स हैं, और यहाँ पर फिर एम्प्टी एनर्जी लेवल्स हैं, और इनके दरमियान वाइड रीजन है. दिस वाइड रीजन इज called the band gap. ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड जो फील्ड है,
So wide region extends from the top of the field to the bottom of the vacant. This is band gap. It is the energy difference between valence band and conduction band. When a photon with energy equal to or greater than this band gap is absorbed, when photon having energy equal to or greater than band gap is absorbed. इस पर जब photon, when it's hit a photon, this is hit by a photon. When photon falls, when this material, this semiconductor is irradiated with light. Light can be visible or UV or visible, depending upon the band gap of the semiconductor. So when it is irradiated, the light is absorbed by the semiconductor and an electron is excited from the valence band to conduction band. यहाँ से electrons valence band से conduction band में excite हो जाता है. An electron is excited from valence band to conduction band. Result क्या होगा? As a result, it generates a positive hole in the valence band. It generates a positive hole in valence band and photo-induced electron in the conduction band. Photo-induced electron in conduction band. And when this is irradiated, h nu having energy greater than or equal to band gap Eg. तो क्या होगा? Electron is excited. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इधर a positive hole is created और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. So as a result of irradiation, a pair of the electron and hole pair is formed. As a result of irradiations, a pair of hole electron is formed. This pair is called exciton. एक्सीटॉन. तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, या तो ये एक्सीटॉन रिकम्बाइंड होंगे यानी टू प्रोसेस पर होंगे. नंबर 1, recombination of the electron hole pair, recombinations of electron hole pair. So the absorbed energy will be released in the form of heat. Absorbed energy is released in the form of heat. और दूसरा ऑप्शन क्या है? This exciton undergo a series of reactions. Exciton undergo a series of reactions which ultimately result in a photochemical reactions, resulting in a photochemical reactions.
वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस क्या है, इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैव बी प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, लेकिन हम सिंपलेस्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। इस रिएक्शन में से द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद ऑक्सीडेंट, द फोटो इंड्यूस्ड द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इट react with oxidant to produce the reduced product, reacts with oxidant and produce the reduced product. Reduced product. इस तरह पॉजिटिव होल ने भी रिएक्ट करना है। The positive hole react with reductant. The positive hole reacts with reductant and produce the oxidized product and produced oxidized product. And the process क्या है? When a semiconductor is irradiated, electron from the valence band is excited to the conduction band. As a result of this excitation, a pair of positive hole and electron is formed. This pair is called the exciton. So this exciton may react further. वो रिएक्शन क्या है? या तो ये दोनों रिकम्बाइंड होंगे, वापस डी एक्साइट हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में सेमीकंडक्टर आ जाएगा, और जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है दैट विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, आर दिस दिस एक्सिटॉन रिएक्ट फर्दर एंड प्रोड्यूस द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। वो रिएक्शन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ने रिएक्ट करना है विद ऑक्सीडेंट और पॉजिटिव होल ने रिएक्ट करना है विद रिडक्टेंट, सो दे प्रोड्यूस्ड द photochemical reactions. In one of the mechanism, different mechanism है, तो उसके लिए एक mechanism ये है कि जो photo excited electron है it react with oxygen and produced superoxide anion radical. In one mechanisms the photo-induced electron in conduction band reacts with oxygen and produces superoxide anion radicals. This superoxide anion radical further react with water superoxide anion radicals reacts with water and produces OH radicals, ultimately produce OH radicals. इसी तरह जो पॉजिटिव होल है, the positive hole in valence band, it react with moisture, that is water, and ultimately produced OH radicals and produces OH radical through series of reactions. तो इसमें भी OH radical बनेंगे और इसमें भी OH radical बनेंगे. These OH radicals are highly unstable and highly reactive.
these OH radicals are unstable and highly reactive species. So they further proceeds the photochemical reactions. Under irradiation of the semiconductor, electron is excited from the valence band to conduction band. As a result, electron hole pair is formed. This is called the exciton. This exciton further react and produce OH radicals. वो reaction किस तरह है कि इस होल ने रिएक्ट करना है with water. यानी अगर हम इस तरह लिखते हैं metal oxide, that is the semiconductor metal oxide. When it is irradiated, then positive hole and electron is formed, exciton is formed. तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होंगे फिर? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इसमें पॉजिटिव होल H ने रिएक्ट करना है विद वाटर. इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड OH रेडिकल. देन इस तरह एक मैकेनिज्म ये भी है कि 2OH with 2H2O it produce 2 hydrogen ions and H2O2 hydrogen peroxide, and then H2O2 it further react and produce OH radicals. This is oxidation reactions. और दूसरा है reduction reactions. वो क्या है कि electron react with oxygen and produced superoxide anion radicals. This superoxide anion radical further react with water in the presence of hydrogen ions. ये hydrogen ions जो पहले रिएक्शन में प्रोड्यूस हो गए हैं in the presence of hydrogen ions, and they produced hydrogen peroxide and oxygen. And then hydrogen peroxide it further react and produced 2 OH radicals. अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर है H प्लस होल और इधर है इलेक्ट्रॉन in the valence band and conduction band. ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है. This oxygen react, the electron react in the presence of oxygen and ultimately produce the O2 superoxide anion radicals, and this superoxide anion radical further react with water in the presence of water and produce OH radicals. यहाँ पर H it react with water. In this case में in the presence of water and hydrogen ions it produced H2O2, and then it decomposed to OH radicals. तो दोनों केस में ये OH radical बन जाते हैं. This OH radicals then it react with the reactants and produce the product. इस तरह ये reactant के साथ जो substrate है and produce the product. So it means the photocatalytic activity depends on the lifetime of these positive hole and electron pair, the exciton. तो अब इसमें एक combination तो ये है, एक process तो ये है कि they combine. So this combination is undesirable.
अगर हमने एक्टिव फोटोकैटलिस्ट लेना है तो दिस कॉम्बिनेशन मस्ट बी प्रिवेंटेड। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? या तो एक तरीका है कि इस बैंड गैप को बढ़ा दें, इनके दरमियान इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, फिर इजीली कंबाइन नहीं होंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि फिर एक को एक्साइट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देयरफॉर द सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ नॉट डिज़ायरेबल। यानी हमने एक्टिव कैटलिस्ट हमारे लिए कौन सा होगा जिसमें ये H और इलेक्ट्रॉन ये वापस रिकम्बाइन ना हो। अगर ये वापस रिकम्बाइन हो जाएंगे, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ OH रेडिकल्स एंड नो फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो फिर तो वो तो एक्टिव फोटोकैटलिस्ट नहीं हुआ। तो एक्टिव फोटोकैटलिस्ट कौन सा होगा जिसमें से हमारे पास ये रिएक्शन हो कि H ने रिएक्ट करना है, ये प्रोड्यूस करे OH रेडिकल्स और इस तरह इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस करे OH रेडिकल, और ये तब होगा जब ये दोनों आपस में वापस रिकम्बाइन ना हो। तो इसको रिकम्बिनेशन से बचाने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को सेपरेट करें, यानी बैंड गैप को इंक्रीज़ कर दें, फिर ये इजीली कंबाइन नहीं होंगे। लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम क्या है, जब इजीली कंबाइन नहीं होंगे तो फिर इसी तरह इजीली एक्साइट भी नहीं होगा ना, तो देयर विल बी नो फोटोकैटालिटिक एक्टिविटी। इसका मतलब इस सेपरेशन को वो डिज़ायरेबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को कम्बिनेशन से रोकना है, इनके रिकम्बिनेशन रेट को डिक्रीज़ करना है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चेंजेस करनी होगी कि ये रिकम्बाइन होने के बजाय वो फर्दर रिएक्शन में चले जाए। तो वो चेंजेस क्या है वो फिर हम इस नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ to increase the lifetime of the exciton in order to enhance the photocatalytic activity of the semiconductor.